हम लोग निकल रहे हैं मैसूर के लिए। एंड मैसूर यहाँ से अप्रॉक्स 170 है मेरी लोकेशन से। एंड अभी बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है और रात के 1 बज चुके हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसी होती है राइड, मिलते हैं आगे। यार जल्दी रहती है इन लोगों को। सो गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मैसूर से भी आगे और टाइम हो चुका है अप्रॉक्स 6:45। और बहुत अच्छी राइड रही अभी तक फ़िलहाल, और काफ़ी अच्छा था। ट्रैफिक कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि जितने भी टाउन्स या छोटे छोटे सिटीज़ पड़ते हैं वहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं था। तो हम लोग बहुत इजीली अपनी स्पीड को और रोड्स को एंजॉय करते हुए आ रहे थे। और अब हम लोग मैसूर से करीब हम लोग 25 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और हम लोग अब अपना पहला टी ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में टी ब्रेक लेना यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो हम लोग अपना टी ब्रेक लेंगे, अपनी टी को एंजॉय करेंगे, और आप लोग इस छोटी सी एक टाइम लैप्स को एंजॉय करो तब तक। सो गाइस, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हो, हम लोग एंटर हो चुके हैं बंदीपुर फॉरेस्ट। और यहाँ पे छोटी सी चौकी है। बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड और ये सब रहते हैं। एंड आई थिंक पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं। और क्योंकि यहाँ पे अंदर गाड़ी स्टॉप नहीं करनी है कहीं पे, इसलिए। और काफ़ी अच्छा व्यू है, आप जैसा देख रहे हो मैं राइट एंड लेफ़्ट साइड में पूरी फुल ग्रीनरी है और बहुत ही सुंदर व्यू है। लाइक मज़ा आ गया। और तो फिलहाल आप समझ ही गए होंगे मैं बंदीपुर में हूँ। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं ऊटी। और बस ऊटी यहाँ से 84 है, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे होगे। काफ़ी सारे बाइकर्स हैं और लोग रुके हुए हैं। ओ हो, ये देख। कुछ टाइम पहले यहाँ पे आग लग गई थी यहाँ के जंगलों में बंदीपुर के, तो वही है। उस वजह से यहाँ काफ़ी पेड़ जले हुए दिखेंगे आपको।
Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again, yeah. State your name, big dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Strip it and dip it in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. वेलकम टू बंदीपुर, बंदीपुरा सॉरी, बंदीपुर बोलते हैं बट है इसका रियल नेम बंदीपुरा, नॉट बंदीपुर, बंदीपुरा। और यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पे स्टॉपेज पॉइंट है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट है और कैंटीन्स हैं यहाँ पे। If he never heard of been dope, he just napping. Jackson's off the rapping, keep it on my body, bitch. I'm broke if you ask it. Don't gotta sell emotionalis, flawless, broken whips as long as it is foreign. Heard you want it cause the yam's enormous. What's an ass since she isn't gorgeous? Live my life, last name a Morgan Freeman. Trying to touch a forest, do not know when knocking on the door is. Came in, I came in, I came in, did it like the Porsches coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10, 10, 10, yeah. भाई क्या सीन है यार। रेलवे स्टेशन 13 किलोमीटर, वर्टिकल रेंज 15। हेयर पिन जो बैंड थे वो बचे हैं 5, 36 टोटल थे और अभी बचे हैं 5। अब बचे हैं 4 हेयर पिन बैंड, जैसा कि आप देख रहे होगे।
सो गैस जो ऊटी में हम लोग रुकने वाले हैं वो ओयो के थ्रू हमने होटल बुक कराया था, और लेट्स सी देखते हैं यार कैसा होता है हमारा ओयो का एक्सपीरियंस ऊटी में। फ़िलहाल मेरा अब तक का ओयो के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हर जगह। मोस्टली कहीं कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अभी तक तो अच्छा रहा है। मोस्टली जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ मैंने ओयो के थ्रू बुक कराया है। सो लेट्स सी देखते हैं ये वाला कैसा होता है। और फ़िलहाल हम लोग ऊटी पहुँच चुके हैं, हम लोग रेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे हम लोग कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, ऊटी में क्या क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे यार एंड करता हूँ, और लास्ट में एक आपके लिए काफ़ी खूबसूरत सी टाइम लैप्स है। अगर आप लोग को अच्छी लगती है टाइम लैप्स तो उसको आप इन्जॉय। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अगर आपका कोई भी सुझाव तो उसको कमेंट करो। सो ऑलवेज वियर हेलमेट यूजिंग सीट बेल्ट एंड बी हैप्पी।